तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमो। अथो श्रीमद्भगवद्गीता द्वादश अध्यायो भक्ति योगो। अर्जुन उवाच एवं सततो युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्त्यां तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परा उपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समद्बुद्धयो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तमासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवानीमचिरेत् पार्थो मयि आवेशितचेतसां मयि एव मन आदत्सो मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतो उद्धम न संशय। अथो चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां चाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि अशक्तोऽसि मत्कर्म परमो भव मातार्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मत्यगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततो कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानात् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रो करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारो समदुःखः सुखक्षमी समतुष्टो सततमो ज्ञातो आत्मा दृढनिश्चयो मयि अर्पितो मनोबुद्धिः मद्भक्तः स मे प्रियो। यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च यो हर्षो वर्षभय उद्वेगो मुक्तो यश च मे प्रियो। अनपेक्षो शुचिर्दक्षो उदासीनो गतव्यदो सर्वारम्भो परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ अशुभ परित्यागी यो मद्भक्तो स मे प्रियो। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानो अपमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गो विवर्जितो तुलो निन्दा स्तुतिर्मौनी समतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिर्मौति भक्तिमान् मे प्रियो नरो। ये तु धर्ममृतं यदा यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तस्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सविति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मवेदा योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादश अध्यायो। সকলকে নমস্কার।